Namaskar and welcome to this exciting episode of Sattology Debunking Mythology. Sat means truth, Logos means a study or science, Sattology means science of truth, a study of truth. Opposite of that is mythology, which means a science of fake lie imagination or study of fake lie or imagination. Comes from the root word myth, is in Sanskrit word, which means a fake lie imagination. And Sat is opposite of that, which means a truth, eternal, all those meanings are there. Sat. That's called Satya. The word Satya comes from Sat root. Now, one important thing to say is that there is a 12x program of debunking mythology. You are welcome to join. I have very, very special guest, who has written a book for the first time. So it's a more than 500 pages book. If you have patience to read it, if you don't have patience to read it, just imagine how much patience does it take to write it. So I have a very, very special guest. You have seen her last video and all of you loved it on Shatapat Brahmana. So let us welcome Dr. Aparna Dhir Khandelwal. Welcome, Dr. Aparna Khandelwal. Namaste, Aditya ji. So, Aparna ji, when you were writing this book on Jyotish, now I'll give you one reference. Nowadays we all need a lawyer on our side. We need a doctor on our side. And we also need some other friends. But the most important friend, Jyotish, is now no longer in the society today. And whereas, if you look at the life of Pandavas or the successful king, even Cholas, Pallavas, Marthandavarma, recent kings who were dharmic, they all kept a Jyotish she also on the side to foretell them certain events or certain inducements by the star positions. So, how do you separate today the Vedic astrologer from the commercial astrologers? A lot of Americans also do astrology. So, what is the difference? First of all, in this regard, I want to clear this that previously we used to have Jyotish Acharya as a dignified position in the society. But today, what we feel, I too consult with astrologers in my personal problems, but again, we consult them or we think that, ठीक है, देखते हैं, maybe he say truth about us or not, but we don't give them that dignified place as we used to give them in our ancient Indian culture. And also, we see all the Bollywood and the other movies, people, they make fun of them. By the way, most actors and most engineers are the most superstitious lot. Most engineers and most Bollywood people, media people, and they regularly go change their names. In India, it's very common. In the US, also very common. In the US, also they go to all the clairvoyants and other things. They say, "Tell me my future." That's what they're working on. That they work on. So it is a modern doubts created by so-called intelligent people. So-called, just because somebody has money doesn't mean they are wise as also. Oftentimes the money goes usually in the hands of usually in the wrong hands. What do you have to say on that? Yeah, exactly. I feel that previously what we have such an astrologers with us who consult directly, who communicate directly through the astronomical point of view by gazing at the stars and other things. But currently what we have some sort of professional and commercial kind of a things. I have something to tell about this in my slides which I want to present here. So, Dr. Khandelwal, go ahead and do it. Show it to us. Sure. Thank you so much. Oh, exactly.
Yeah. So as I was talking about, my question to all is this: is Vedic astrology really exist? Why we are talking about this? Why I'm taking this topic? Because last in my previous lecture I was talking about Shatpat Brahman, and today also what I am going to say is based on that only. Yes, I am giving an introductory about how we can go in deep dive into the Shatpat Brahman, as Aditya ji told us that we have 100 parts to go, and I was also mentioning that. And since I'm starting with this first topic, that is the do we really have Vedic astrology? So, starting with the first slide, see, today we all come across various sites like this. This is just a random pick. There is nothing like my personal selection, like Vedic astrology horoscopes, or we have something like premium Vedic horoscopes, or we have like get free Vedic horoscopes. So, do you really think that we today, if we are having our horoscopes or something like that, so is it really according to the Vedic calendar? Or Vedic, I mean, Vedas are there to tell us the horoscope area. Do we find any such horoscope concept in our Vedic literature? What what we find, like we find about stars, or what, or do we find about the Rashi Chakra, or both? So why I'm taking this subject? Whenever anybody tells you that I'm visiting some astrologer or something, so first of all they say, is he going to tell you your horoscope from the Vedic perspective? और ऑल्सो एस्ट्रोलॉजी सुनते ही जो हमारे मन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है, that is it related to the palmistry or the calendar, as I say, horoscope, or something like future predictions. So do we have predictions in our Vedic era? And here I am talking about the Shatpat Brahman only. So considering that, do we have prediction part in the Shatpat Brahman? This is the question for this particular presentation, why I'm giving a talk on this particular thing. Now, talking about the Vedic, whole Vedic literature, when we consider Vedic literature, what is that? What is that? It is mainly divided into two parts. We can put it in two parts, like in the Vedas and the Vedangas. Now, what is Ved? You all know, and we have already discussed on this, that Vedas are four. You all know Rig Ved, Yajurved, then Samved, and Atharved, and their subsequent books, as we have Brahman Granthas, Aranyak, Upanishad, and other books. And then we have the Vedangas. Now, what is the Vedang? Vedang, जैसा कि उसके नाम से ही पता चलता है, जो वेद का अंग है, that is Vedang. Now, what is the need to have these Vedangas, and why it is collaborated with Ved, and we have the whole Vedic literature? It is like, actually, the Vedangas are the one with their help only we can easily understand the Vedas, our Vedas. Now, what are these Vedangas, and how many? As we have four Vedas, so how many Vedangas we have? कितने अंग हैं वेद के? ऐसे कौन से अंग हैं जिनसे हम वेद को बड़े आसानी से समझ सकते हैं? वो है 6 वेदांगास, और षड वेदांग हम इन्हें इस तरह से पुकारते हैं, बोलते हैं. Now, first of all, in about these Vedangas, we got information in the Mundak Upanishad. As you all are very much familiar with the Upanishad culture and the Upanishad books. So Mundak Upanishad is one of that. And in that only, we found first time these names of these 6 Vedangas. That is I'm reading the verse only. Tatra apra Rigvedo Yajurvedah Samvedo Atharvedah शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति, और ये मुंडक उपनिषद का वर्ष है. इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर चारों वेदों के नाम हैं, और शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग कहे गए हैं. अब इन सबको एक साथ मिला के अपरा विद्या कहा गया है. So what is the difference? Why it is called as apara vidya? So there is something beyond that. So there are actually 2 kinds of vidya as explained in the Upanishad, that is the Paravidya and the Aparavidya. The Paravidya is the one जिससे आप ब्रह्म के बारे में, जो मेन सुप्रीम बीइंग है, उसके बारे में आप जान पाते हैं. लेकिन
To understand, to know the Supreme Being, we have to continue our studies through all these Paravidya subjects, that is the Vedas and the Vedangas. Then only we are able to understand our Paravidya, that is the Brahmgyan. Now, how these are important, how these six Vedangas are important, that is revealed in the Panini Shiksha only. That is a Chandaha Padau tu Vedasya, Hastau Kalpaha Atha Patyate, Jyotisham Ayanam Chakshu Niruktam, Shotram Uchyate, Shiksha Granam tu Vedasya, Mukham Vyakranam Smritam, Tasmat Sangam Aditya Brahmaloke Mahiyate. तो यहाँ पर ये बात वेद पुरुष की एक कल्पना की गई है, जो वैदिक वांग्मय है उसको एक लाइक मैन वी हैव टेकन एट इट एज एन एग्जांपल, लाइक जो छंद हैं वो उसके पैरों की तरह हैं, जो हाथ है, जो कल्प है वो उसके हाथों की तरह हैं, जो ज्योतिष है वो उसकी आंखों की तरह है, और जो उसके जो ये निरुक्त है वो उसके कानों की तरह है, शिक्षा उनकी नोज की तरह है, एंड जो पूरा व्याकरण है वो उसके मुख की तरह है। तो इन 6 वेदांगों को जानने के बाद ही ब्रह्मलोक को जाना जा सकता है। नाउ बिकॉज वी आर वेरी न्यू टू दिस सब्जेक्ट, सो वी मस्ट नो व्हाट इज छंद। छंद जो है दिस इज नथिंग बट, इसके अंदर जो भी हम वेद के हमारे वॉट एवर वर्ड्स वी आर हैविंग वॉट एवर मंत्रास और द हिम्स, वी यूज टू सिंग दैट मंत्रास। तो जो उनको गाने की जो पद्धति थी उसमें जो छंदों का प्रयोग होता था, उन्हीं छंदों का विशद ज्ञान, मतलब बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन वी फाइंड इन दी छंद वेदांग। देन कल्प के बारे में यदि हम बात करें, कल्प जैसे कि हम सूत्र ग्रंथों के बारे में हम जानते हैं कि हमारे पास वी हैव शौत्र सूत्र, देन कल्प सूत्र, देन गृह सूत्र, देन धर्म सूत्र, एंड इसी तरह से हमारे उसके अंदर और देन शुल्ब सूत्र, जिसके अंदर हम रिचुअलिस्टिक जो वेदियां बनाते हैं उसके बारे में वर्णन मिलता है, या पंच महायज्ञ के बारे में वर्णन मिलता है, और भी जो हमारे यज्ञ के विधान है या जो हमारे कर्तव्य और नियमों का बोध होता है, वहां से हमें कल्प के बारे में कल्प उसका बारे में बताता है। देन ज्योतिष इज आर द सब्जेक्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन ज्योतिष ही है दैट which is equivalent to the eyes of the Vedic literature. So ज्योतिष के थ्रू ही हम सब जान पाते हैं, इसीलिए it is very much important. Then we have the निरुक्त। निरुक्त में जितने भी हमारे वेद मंत्र हैं उसके अंदर जो शब्द और पदों का प्रयोग हुआ है, उनकी etymological derivations जहां मिलती हैं, that is called निरुक्त. And then we have the शिक्षा। शिक्षा is nothing, शिक्षा वेदांग is nothing but where we find that जितने जो ये हमारे मंत्र हैं उनके अंदर किस तरह के स्वर यूज हुए, किस तरह से उनको गाया गया, क्या उनके अंदर उदात्त था, अनुदात्त था, ये सब वैदिक पद्धति है, which I am trying to explain, but we are not going into the details of this. So that is related to the Shiksha Vedang. And then the Vyakaran, the grammar, you all know that grammar is very much important to understand any literature. So this is how we can classify our 6 Vedangas, and which is very much important to understand the whole Vedic literature, to whole Vedas, and that comprises of the Vedic literature, the whole Vedic literature. So moving ahead with the Jyotish mainly, what you can say कि ज्योतिष क्या है, उसको समझने के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं, so do you think Jyotish was there in the Rigvedic era? Do you think that? But we found that Rigveda is nothing but having the mantras and the prayer and the hymns. Only the स्तुति परक मंत्र ही हैं वहां पर। उन स्तुतियों से हम समझ सकते हैं कि ज्योतिष रहा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर स्तुति मिलती है। We find prayers related to the sun, we find prayers related to the Chandra, we find moon, we find prayers related to the constellations, some few constellations, not each and every. So this is how we can say that is the start from the Rigvedic era, how we find Jyotish in that sense. Then we have the word Nakshatra Darsh. This is the word which we found in the Yajurvedic literature, and that too in the Taittiriya Samhita or the Maitrayani Samhita, that is the Taittiriya school mainly, that is the Black Yajurveda, as you know, Krishna Yajurveda की जो हमने पिछली बार भी बात की थी talk में. So Black Yajurveda basically depicts that this word Nakshatra Darsh, नक्षत्रों को देखने वाला.
the one who sees the constellation, that is the nakshatradarsh. लेकिन ये वर्ड हमें कहाँ मिलता है? हमें मिलता है तैतरीय ब्राह्मण में, हमें मिलता है तैतरीय संहिता में, हमें मिलता है मैत्रायणी संहिता में. So this is how we can say that from the Rigvedic era to the Black Yajurveda era or the Taittiriya Brahman till the Brahmanical era, we हमारे पास ऐसे लोग आ गए थे सोसाइटी में जो कि नक्षत्रों का ज्ञान जिनको हो गया था और जो नक्षत्रों को देखने लग गए थे. तो ऐसे स्पेशलाइज्ड पीपल, एक्सपर्ट पीपल we can found very much in the Yajurvedic literature. So this is how this we can say, or we can translate this as a start of the Jyotish Shastra. Then we have nakshatra vidya word, which we found in the Chandogya Upanishad. Then again, after the Brahmanical literature, we have Upanishad literature. Then in the Upanishad, again in the Chandogya Upanishad, we have the nakshatra vidya word. So this explained that nakshatra vidya, nakshatro ke bare mein jo study thi, whatever the nakshatra, jo nakshatro ko dekhne wala expert tha, whatever he is seeing in the sky, he's trying to explain that in the form of a shastra, in the form of a lesson, or he trying to explain that thing. So that this is how nakshatra vidya bani. और इस सबको मैं मिला के कह सकती हूँ, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द ज्योतिष. सो ज्योतिष इस रूप में वैदिक हम कह सकते हैं कि वेद में इस रूप में था. लेकिन अभी तक हमने कहीं भी ये बात नहीं की है कि देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ हॉरोस्कोप और लग्न चर्चा और राशि चर्चा और एनीथिंग लाइक दिस. दिस इज बेसिकली व्हाट दिस इज बेसिकली एक कॉन्स्टेलेशंस को देखने का तरीका था, और भी जो हमें ब्रह्मांडीय आकाशीय जो हमें दिख रहे थे हमारे सामने, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहे थे. इसीलिए ज्योतिष के लिए कहा जाता है प्रत्यक्षम शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र. या जो इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करती हूँ. अभी हम इसको और इस तरह से समझ सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र वो ज्योतिष नहीं है कि हम उसे वेद में खोजें और कहीं हॉरोस्कोप थे, प्रिडिक्शंस थे. लेकिन अगर हम ज्योतिष शास्त्र को इलैबोरेट करें, ज्योतिष का स्टार्ट हमारे को वेद में दिखता है, हमें ब्राह्मणिकल लिटरेचर में दिखता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र आगे बहुत ही इलैबोरेट हो गया, बहुत ही बढ़ गया, विस्तृत हो गया, और वेदांग ज्योतिष और लौकिक ज्योतिष के रूप में हमें दिखने लगा. और लौकिक ज्योतिष के रूप में भी यदि हम देखें उससे, then we have another streams like Ganat Jyotish and the Falat Jyotish. Falat Jyotish you all know, where you can find the horoscopes, which is very much not there in the Vedic, like the Brahmins. Basically, I'm talking about the Brahmin literature, and even before that. And then the Ganat Jyotish is related to the calculations. Yes, we have certain calculations in the Vedas, but not in the form of the Ganat Jyotish as we found in the later Jyotish books. Then further, this Ganat Jyotish is divided into can be categorized as सिद्धांत ज्योतिष, और जिसका हमें बुक्स मिलती हैं, आप सबने सुना भी होगा, सिद्धांत शिरोमणि, या हमारे सामने और भी बहुत सारी सूर्य सिद्धांत इज द मोस्ट पॉपुलर वन, जिसके बारे में हम आजकल बहुत ज्यादा हमने सतोलॉजी के सेशंस भी देखे हैं. Then we have the Falat Jyotish, which is further divided into three major streams, that is the Samhita Jyotish, then Hora Jyotish, and then there is another field which is further divided into various sections. Now the Samhita, you all know Bhadrabahu Samhita, Narad Samhita are the popular books. Then the Hora Shastra, which is related to the Ahoratra, that is Ahoratra is nothing but a day and night circle. And then we have Prashna Shastra, Prashna rakhein aur aapko uttar milega. Shakun Shastra, whatever we are auspicious, unauspicious things are we are looking at. So according to that, we have predictions. Then there are other, like Samudrik is related to the palmistry, and Vastu you all know, and then the Muhurt Shastra related to the time. But we are not going into the details of these particular Jyotish streams, because these are the inventions of the later period. We are basically focusing on these things, these three, which are related to the Brahminical literature, and I'm going to discuss only that portion in this presentation. So we are talking about the Shatpat Brahman. We were talking about the Shatpat Brahman in our previous lecture, and also I'm continuing with that only. So we have Shatpat Brahman, and what is it is, this book is related to what? Mainly, this is related to the rituals. Lots of yagyas are mentioned in this particular book, and this is, and इसकी पूरी शैली ही है, आपको लगेगा आप कोई यज्ञ ही कर रहे हैं बैठ के, तो वहां सिर्फ रिचुअल्स के बारे में ही बात हो रही है.
ना जब रिचुअल्स, हम कोई भी यज्ञ करते हैं, आज भी हम घर में कोई हवन आदि क्रिया करते हैं, तो हमें क्या चाहिए? अच्छा रिजल्ट चाहिए। लेकिन अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? अगर हम उसे अच्छे टाइम पे करेंगे। आज भी हम इस चीज का विचार करते हैं, इवन इन द 21st century. So, do you think our Vedic rishis were have some telescope with them, and they try to find out the best possible time to have the rituals? No, this is fairly no. Nothing like that was there in that era. So what we have, they have observations only. They are observing what? They are watching sky. They are considering the movements of the celestial bodies around them. They are considering the changes of time and time units around them, and then the surroundings. The point, the he's I mean the जिसको हम दिशाएं कहेंगे, डायरेक्शंस कहेंगे, वो किस तरह से बदल रही हैं, उसमें टाइम यूनिट्स का क्या रोल है, इस तरह से वो ऑब्जर्व कर रहे थे। और उनको ऑब्जर्व करते हुए वो अपनी बात को रख रहे थे, अपनी यज्ञ आदि क्रियाओं को कर रहे थे। तो दिस इज हाउ दे आर गेटिंग द रिजल्ट। बेस्ट टाइम को फॉलो करते हुए, बेस्ट टाइम को देखते हुए, दे आर गेटिंग रिजल्ट्स। एंड दिस इज हाउ वी कैन से दैट एस्ट्रोनॉमी इवॉल्व्ड। जो आज हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज हैं, अगर हम उसे वैदिक एरा के साथ रिलेट करें या वैदिक एरा के साथ जोड़ने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं कि हमारे आज के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनका कहीं ना कहीं, whatever scientists are talking about today, their base, their ancient, जो उनके दिमाग में जो बात रही होगी, their base is somewhere in the Vedas only, and that too in the Brahminical literature, because that is related to the rituals, and rituals cannot be performed fruitfully if they are not observing at the best possible and auspicious time. So astronomy was there, and that is the one first study which was evolved during that era. And after that, we have astrology. So these both are connected to each other. But because I'm talking about the results, so results से ही हम कह सकते हैं ज्योतिष का उद्भव हुआ होगा, ज्योतिष का विकास हुआ होगा. So this is how we can say that we are going into the subject of Jyotish. And this is how we can say that Vedic Jyotish was there in the form of astronomy. Now, last time we had a discussion on about the Brahman. So जो ब्राह्मण वर्ड के बारे में अगर हम बात करें, इसी को मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी। अगर हम उसे ग्रंथ के रूप में देखते हैं, क्योंकि हम यहाँ शतपथ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, और शतपथ ब्राह्मण कुछ और नहीं, एक ग्रंथ है जिसमें 100 मार्गों के बारे में बात की गई है, और ऐसा मैंने, जिसके 100 अध्याय हैं, और इसके बारे में मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन में बात कही थी। उसमें क्या है बेसिकली, अगर क्यों इसे ग्रंथ कहा जाता है, क्योंकि इसमें व्हाट वी हैव लॉट्स ऑफ प्रेयर्स, बहुत सारी प्रेयर्स हैं। किस लिए प्रेयर्स हैं? टू हैव द फ्रूटफुल लाइफ, टू हैव अ गुड लाइफ, टू हैव like a sustainable like environment, then everything around us is so healthy and happy kind of thing. So we have so many prayers in this books. That's why Shatpat Brahman says Brahmvai mantra, जितने जो मंत्र हैं उनको वो ब्रह्म मान रहा है, और मतलब जो सुप्रीम है, इस तरह से वो अपनी स्तुतियों को इस तरह से मान रहे हैं। देन नथिंग एल्स, मंत्रों का विनियोग कहने से अभिप्राय है कि वॉट एवर प्रेयर्स वी हैव इन द यजुर्वेद और द संहिता पार्ट ऑफ दीज वेदास, देन द ट्रांसलेशंस और द एक्सप्लेनेशंस आर देयर इन द ब्राह्मणास, एंड दैट टू इन द शतपथ ब्राह्मण, as it says, like brahmanam naam karmanah tan mantranam cha व्याख्या ग्रंथ. It is said in the तैत्तिरीय संहिता. जो ब्राह्मण है वो उसी का नाम उसी को दिया जाता है, ऐसे मंत्रों को दिया जाता है जो उसके व्याख्या परक होते हैं, व्याख्या परक ग्रंथ है, मतलब जो जिन ग्रंथों में व्याख्या की गई है मंत्रों की, that is known as brahman. So then we have the yajna vidhan, as I was telling again and again. Whatever we found in the Brahman, that too in the Shatpat Brahman, is in the form of the rituals only. And lots of rituals are there, as you can have Chaturmasi Yagya, Rajasuya Yagya, Vajpayee Yagya, then Dash Purnavas, Agni Hotra, and many of them. So again, all these Yagya, इन सब यज्ञों की जितनी भी दृष्टि है, चाहे वो उसमें
उनकी चाहे वैज्ञानिक दृष्टि हो, चाहे आदि भौतिक विश्लेषण हो, चाहे आदि दैविक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, इन सब तरह की जो हमें यहाँ पर विधियां मिलती हैं यज्ञ को लेकर, वो सब इसी पे आधारित करती है दैट वी शुड परफॉर्म आवर रिचुअल्स ऑन द बेस्ट ऑस्पिशियस टाइम, एंड दैट्स व्हाई वी हैव all the astronomical data available to us in the Shatpat Brahman, and that can be classified into this format. We have lots of information about the Surya, about the Chandra, then the constellations that is known as nakshatras, then the Saptarishi Mandal, meteors even, and then lots of changes about the time and their time units, even the smallest time units, and the surroundings. Surroundings plays a very important role. Like today also, we consider it in the field of the Vastu. So this is how in all my later on subsequent presentations, I'm going to discuss the various categories of these celestial, this astronomical happenings which were there during that era, and how ancient these are, that can also be directed through those presentations. Thank you very much. Over to you, Aditya ji. Thank you so much, Dr. Khandelwal ji, Aparna Dhir Khandelwal. So one of the questions which comes to the mind in the Jyotish is so you already said that we are talking about a different level of astronomy, and not like the palm reading or the astrology, and also telling what is a immediate future. That's what people make fun of. But here we are talking about a science based on constellations, your birth chart, and it can predict a trend, not the exact happening, because your karma is independent. Your karma decides your destiny. So how does this knowledge tie up with karma? Yeah, exactly. So if you, when we go through into the details, we find that certain yagyas are going to perform in so and so time period with an observations around them, but for the fruitful result, and that result will tell you कि ये कर्म करने से, मतलब अगर आप ये यज्ञ करते हैं तो आपको ये फल मिलेगा। इस तरह की बात भी हमें लेटर टेक्स्ट में शतपथ ब्राह्मण के ही कुछ अंशों में हमें मिलता है, लेकिन ये जो कर्म फिलॉसफी है उसको जोड़ा जा रहा है नक्षत्रों आदि के ज्ञान से, और लेकिन उसको जो कर्म है, कर्म यहाँ पर कुछ और नहीं, खुद कर्म कांड है। जो यज्ञ की बात मैं कर रही हूँ, कर्म कांड के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वो उनका ध्यान दे रहे हैं और बार बार फोर्स कर रहे हैं टू परफॉर्म द यज्ञ अकॉर्डिंगली to every auspicious time. So this is how we can say that karma is related to the rituals. And again, इसको जब हम और डिटेल में जाएंगे तो वो वहां खुद ही कह रहे हैं कि पुण्य कर्म को करने से पुण्य फल मिलता है, पाप कर्म को करने से पाप फल मिलता है। तो ये भी एक डिटेल है, और ये कर्म फिलॉसफी जो शतपथ ब्राह्मण की, उसके बारे में हम बात करेंगे। In the we already last time I spoke on that Yajnavalkya, Taittiriya Upanishad. We said that how it is, who is the author of that Yajnavalkya. So in this particular book that you have written, 500 pages, what are the topics you have covered? This is part of your research, I think. What are the topics you have covered over there? The classification of facts, which I had just shown in my slide, that is the main indexing of my book. And how does it benefit the people who claim to be Vedic astrologers? That's why I'm here on your show, so that they cannot claim that. So it will be considered like an attack on them then. Yeah, I don't want to attack them, but I want to simplify this fact that don't fool people. Don't fake them with this thing that we have astrology, we have palmistry and a horoscope in the Vedic era. We don't have nothing like that. There is a separate Vedanta Jyotish on this, and which is the start of the Jyotish. That too in the three categories like Arch Jyotish, Yajush Jyotish, and Atharvan Jyotish, which is again a separate book which tells you about the celestial bodies only, or the time units. Nothing like horoscope or palmistry or the predictions. So when we see Dhaumya advising Pandavas, Dhaumya Rishi was a Jyotish also.
So how do you classify Dhamya Rishi as a, like he's advising Yudhishthir everywhere? And also there are 88,000 Snatak Brahmana who are working with Yudhishthir Maharaj as an advisor. I think nowhere in the world has seen so many advisors. We get tired of only one or two, but here we have 88,000. So what do you have to say, that what was Dhamma Rishi's role then for Yudhishthir? Yeah, I'm not saying that in the Mahabharata era or later than that or before that. I mean, during the epic era, there is no Jyotish like that or astrologer like that. I'm saying that whatever we have in the Shatpat Brahman or during the era of before that is like it is an evolution. Jyotish start ho raha tha, Jyotish पैदा हो रहा था. Jyotish is taking birth. लेकिन whatever you are saying in the period of the Mahabharata, तब तक तो वो नक्षत्र विद्या बन चुकी थी. लोग पढ़ रहे थे क्योंकि हमने तो छांदोग्य उपनिषद की बात कही अभी. तो वो नक्षत्र विद्या अलग से एक आ चुकी है. और मेरे मेरे पास अभी वो रेफरेंस ध्यान में नहीं आ रहा. मैंने अभी पढ़ा भी था कि और विद्याओं के साथ नक्षत्र विद्या भी पढ़ाई जाती थी, जैसे कि सर्प विद्या, भूत विद्या, देव यजन विद्या एंड देन नक्षत्र विद्या इज लाइक इस मतलब कॉमनली जैसे आज हमारे स्कूल या कॉलेज में सब्जेक्ट्स होते. Uh-huh. No, I know that. That's why I quoted Dhamma Rishi. Dhamma Rishi is the one who is looking at the stars and telling Yudhishthir, now this place to go. And most of his observations come out to be correct. Like he is the one who told Yudhishthir to to worship Suryadev. And he told him the mantra also, when what time to worship, and then he got the Akshay Patra. So Dhamma Rishi has played a very pivotal role. Like when the Gandharvas had taken away the four brothers of Yudhishthir, it was Dhamma Rishi who saved him that time. And when the Gandharva met him, then Dhamma Rishi said that you should keep a, Gandharva said that you should, Yaksha said that you need to keep a, it was Chitrath Gandharva, Chitrath, very famous one. Chitrath, he said that you need to keep a Brahman or a teacher ahead of you. So all the armies should have one, that person should be ahead of you. And the same people should be following you. So this is what he said. So in even in the, if you look at the Ramayana Itihas also, where Dashrath Maharaj had Vamadev. Vamadev was his, and Vashishta also. Vashishta and Vamadev both were advising him based on nakshatra. This is the right time to travel. This is not right time to travel, and there will be difficulties on the path. And exactly happened. Whatever he said will happen. So, what is the predictive model in Jyotish here? See, as I said, that it has predictive model has started in the Brahmin era, Uh-huh. because I have few references, very few, very few. I mean, maybe about around 10 only, not more than that. But whatever references I have, it is basically related to the astronomical facts only, or the gazing at the sky only. So we can say that predictory part is the is evaluated is evaluate is ये बना था after Brahminical era, not in the Brahminical era. So I can say that predictions were there, started, it has started. Like I said, like I just said that अगर आप यज्ञ करते हैं और यज्ञ को इस उचित काल में करते हैं और इस तरह से परफॉर्म करते हैं, then you will get this kind of result. So you may find such references with me in my subsequent lectures. But currently, what I'm saying that predictory part was not there, not as much in famous there as we have today. And what you are talking about in the Mahabharata or the Ramayana culture, as I said earlier, that वो एक अच्छा सा सब्जेक्ट बन चुका था, एंड जो उसको जानते हैं तो उनकी बहुत डिग्निफाइड पोजीशन है सोसाइटी में, एंड ड्यू टू दैट उनको सबसे आगे रखा जा रहा है और वही सारे सेना का नेतृत्व भी कर रहे हैं. दिस इज बिकॉज उनको सारा ज्ञान है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं और ऐसा हम देख भी रहे हैं अपने लिटरेचर में. लेकिन ऐसा ब्राह्मणों में या शतपथ ब्राह्मण में हम नहीं देख रहे. Yeah, because the ultimate goal of all these different sciences given by the rishis, munis, is for the benefit of human beings, so that they can come out of the cycle of karma bandhan. They can find out the right muhurta, right time to where they can access the bigger windows. NASA is also talking about the windows all the time. It's not the right window. You cannot see this star at this time. It's a common thing now, but this knowledge is already available in the Vedas. So if the prediction part or the
foretelling part is not there as a science, then the human inquisitiveness goes away. Because the human inquisitiveness is to find out my future, or if I'm doing the right thing. That's why we go to the experienced teachers, because otherwise. So what is your view on that? This is a counter view, and let people we want people to study your book and also the Vedic astrology. So what is your point view on that? See, Aditya ji, first of all, I think कि we should know that कुछ भी नॉलेज जानने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है, जैसे कि हमारे पास अभी तो हम जनवरी फरवरी इस तरह से बोल लेते हैं। पहले अगर हमारे पास ये शब्द ही ना होते, ये बात ही ना होती, तो हमें कोई तो बताएगा ना ये बात, कोई तो बताएगा कि जनवरी फरवरी मार्च आर दी नेम्स ऑफ दी मंथ्स। तो इसी तरह से, या हम जो अपना हिंदी में करते हैं चैत्र वैशाख इत्यादि। तो अभी आप इसी को देखिए कि हमारे पास जो वैदिक लिटरेचर है, इट गिव्स अस, हमें लॉट्स ऑफ नेम दे रहा है, संवत्सर बता रहा है हमें, मंथ के नाम बता रहा है और किस रूप में बता रहा है, और उसी को लेके हम आगे चल रहे हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है कि आप फ्यूचर और इंक्विजिटिवनेस के बारे में यदि बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जो वैदिक ऋषि थे या वैदिक पीपल जिसको हम कहेंगे, वैदिक सोसाइटी को जो हम बात करेंगे, these people are like they are living a very healthy life, I feel so, because जितना भी मैंने टेक्स्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली जब भी बात कर रहे हैं 100 वर्ष जीने की बात कर रहे हैं, जब भी बात कर रहे हैं खुश रहने की बात कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट के साथ मिलकर चलने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे आज हम फ्यूचर को लेके इंक्विजिटिव हैं बिकॉज वी हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स इन आवर लाइव्स, एंड टू उनसे अपने आप को बचाने के लिए या हमें वो प्रॉब्लम्स परेशान ना करें, इसीलिए हम फ्यूचर को लेके ज्यादा उत्सुक हैं। लेकिन हम बचपन में ऐसे नहीं होते। जब हम छोटे होते हैं हमें कुछ पता ही नहीं, हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता। जब हमें प्रॉब्लम ही नहीं पता तो हम फ्यूचर भी जानना नहीं चाहते। कभी किसी छोटे बच्चे को सुने सोचते बोलते हुए कि मैं फर्स्ट क्लास में जाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि फेल क्या होता है और पास क्या होता है। सिमिलरली वैदिक ऋषि, मेरे हिसाब से मैं समझती हूँ, वैदिक सोसाइटी वाज वेरी मच अवेयर ऑफ अ वेरी हेल्दी लाइफ, एंड दे आर परफॉर्मिंग ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू जो फ्रूटफुल उनके लिए था उसके अकॉर्डिंग चल रहे थे। एंड दे, आई डोंट फाइंड सर्टेन प्रॉब्लम्स कि उनके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसके लिए उनके लिए फ्यूचर के लिए इंक्विजिटिवनेस उनके माइंड में रहे, एंड उसके लिए वो प्रिडिक्शंस एंड ज्योतिष और ये सब चीजों में चले कि हमारे पास कोई बताने के लिए हो हमारा भाग्य इत्यादि। Good point, because they're defining the parameters of study, so that you can actually come to your own conclusions, like founding the, आजकल बोलते हैं ना मेटा डेटा बना रहे हैं, मेटा डेटा। तो मेटा डेटा के ऊपर ही आप डेटा बना सकते हैं, नहीं तो अगर डेटा को डिफाइन नहीं करेंगे तो मेटा डेटा, फिर वो डेटा का कोई यूज नहीं है। तो पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये दिस इज द, ये नक्षत्र है, ये द फाउंडेशंस है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशंस है। एंड दिस कैन बी द, ये बेसिस बन जाएगा फर्दर रिसर्च के लिए या फर्दर ह्यूमन डेवलपमेंट, क्योंकि लोक संग्रह is the word used in Veda everywhere. Everything is done for lok sangraha, like to benefit the mankind. और नहीं तो, और हम लोगों ने काल के बारे में बात किया था, लोग बोलते हैं वैदिक काल पहले था, वैदिक काल तो आज भी चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो वैदिक काल कभी खत्म नहीं होता है, वो सर्कुलर है। तो कोई बोलते हैं कि ड्यूरिंग द वैदिक काल, हमारा रेफरेंस ये है कि जब ये ऋषि थे जिन्होंने लिखा था, एम आई राइट, जब इन्होंने लिखा था उस काल की बात। हाँ जी। सो नहीं तो आजकल जो ब्रॉन्ज एज, आयरन एज जो लिखते हैं, दैट इज अ वेरी फूलिश कॉन्सेप्ट, वो वेस्टर्न का पूरा फूलिश कॉन्सेप्ट है, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। तो आयरन एज तो पहले भी होता, आयरन तो पहले भी मिलता था, ब्रॉन्ज भी पहले मिलता था, गोल्ड भी पहले भी मिलता था, शायद पहले ज्यादा मिलता था आज से। एंड कलयुग में पृथ्वी उसको और जमीन के नीचे छुपा देती है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर खंडेलवाल, एंड डू send me the link of this book if it is available, and I'll share it on the show with everybody. And thank you all the viewers for watching, or do comment on the video. Thank you so much. Namaste. Namaste.